privilege to serve as the anchor for today's event. India. India stands at a remarkable moment in history, with one of the largest youth populations in the world. Our country possesses an extraordinary demographic dividend. Programs like Yuva are designed to empower young minds, encourage civic participation, and inspire leadership among the students, so that our students can actively contribute to building a developed nation, a developed India by the year 2047. Today's program is organized in collaboration with the Ministry of Youth Affairs and Sports, which has been consistently working to engage young minds, our youth, our generation, through initiatives such as My Bharat platform. We are truly delighted to have among us a young and dynamic personality who represents the voice and aspirations of the youth of our nation. Now it is time to introduce the inspiring young leader who is with us today. It is my honor to welcome Lavisha Arora, who joins us as the youth icon and representative associated with the Ministry of Youth Affairs and Sports. Lavisha is an emerging youth leader from the Institute of Information Technology and Management, and she has been actively contributing to the youth engagement initiatives under the guidance of Ministry. She has been associated with impactful platforms such as Viksit Bharat Young Leader Dialogue 2025 and 2026, where she has played a key role in engaging young minds in discussions about leadership, about civic responsibility, and about nation building. Lavisha has also represented as a youth icon at various institutes and universities like Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University, inspiring the students to participate actively in shaping the future of our country. Today, she will share insights about My Bharat, youth participation, and how one of us can contribute to the vision of Viksit Bharat. Please join me in extending a very warm welcome to Lavisha Arora with a huge round of applause. May I now request Dr. Chetna to kindly come forward and present a sapling to our esteemed youth icon Lavisha as a token of our gratitude and a symbol of growth and sustainability. Now I would like to introduce Ministry Representative Shri Pratham Singh Ji, and for that I would like to invite Dr. Deepti Sharma ma'am to kindly forward and present the sapling to our esteemed guests. I now invite Lavisha to share her valuable thoughts with all.
Please maintain silence. Hello, I'm audible. Namaste, good morning to you all. I'm Lamisha Arora. It is truly an honor for me to stand here today as a youth icon representing the Ministry of Youth Affairs and Sports. I'm currently pursuing BCom honors, and as you all know that the event for today is Viksit Bharat Yuva Connect. And the topic of our presentation is Vande Mataram, the civilization mantra for Viksit Bharat 2047. Okay, can anybody tell me that why the specific year 2047? Why not some any other year 2050, 2045, anything? हमने 2047 ही क्यों चूज किया? कोई बताना चाहेगा? Anybody else? Okay, raise your hands, please. I think I heard that answer. I don't know who said it. I think maybe you did. Oh, the answer was correct, by the way. Yeah. So as you all know, we got our independence in 1947, and in 2047 it will be 100 years of independence. As students and young professionals, we often think that leadership begins later and later in our lives, but no. Actually, it begins the moment we decide to take the responsibility of the world around us. We can do anything, like we can be helping our nation by anything. Try आपको entrepreneurship के through, community service, NSS, innovation, anything that you got your interest in. For that only, there are many initiatives and platforms like Yuva Connect and My Bharat portal. I'm so sorry. What does they do? They actually play a crucial role in giving us the opportunities. They are creating the opportunities that we can take. If we have interest in volunteering, we have NSS. If we are interested in internships, like I think most of us, हमारा main concern होता है कि we need internship before covering our graduation or post, whatever we are doing. So I think if you guys go through that, there's something or another for each one of us present there. Okay, let us just start with the PPT. Before, okay, so Vande Mataram, we have all heard this word throughout our life at one point or another. Happy? Exactly. Okay, what is Vande Mataram? Like, is it the national song or the national anthem? Yeah, exactly. We all know that. What is our national anthem? Yeah, really great. Okay, when we hear about Vande Mataram, what do you guys feel? Anybody like to say? What do you guys feel when we hear these two words, Vande Mataram? Okay, patriotism and I cannot hear like this. Please raise your hands for me. Okay, maybe say it a little louder if you don't want to stand and raise your hands. Okay, so patriotism and pride, energy, sense of belongingness, anything. We all have different feelings, and we like different things come to each one of our mind when we hear the word Vande Mataram, right? तो इसका रीजन क्या है? यूजुअली हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, दो होते हैं बस, बट वंदे मातरम हमारे इतने सारे मीनिंग्स क्यों हैं?
Because ये सिर्फ दो words नहीं है, it is much more than that. It is connected to our emotions, to our mother tongue. In fact, our Prime Minister once said, you guys can see here also, आज की संसद इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि कभी जेलों और फांसी के तख्तों पर वंदे मातरम गूंजा था. Okay, just imagine that moment when we were not independent and we were under the rule of British. Just imagine young freedom fighters standing there in the middle of the wars. There are a lot of things happening, knowing that any moment they can die. They might be standing here and another they are just gone. And yet, उनके last words क्या थे? They did not cry, they did not do anything. I think if I ever even thought about my last words, it would be, I need my mom. I think most of us would have that. And some would have something else in it. But at that time, each and every person, they did not shouted cries of fear. They just proudly said, Vande Mataram as their last words. But why? Because nation, India, was not just a land. It was Matrabhumi, our motherland, their motherland, and all of us are mother, all of us motherland. And today, as we move towards Viksit Bharat 2047, the question before us is, what does Vande Mataram mean for our generation, for the youth? Okay, so origin of Vande Mataram. Let us travel back to that time only. At that time, British rule was there, and British wanted a particular anthem that they wanted all the Indians to sing. That was God Save the Queen. Imagine the situation, you are Indians, and some Britishers is coming to you and be like, okay, you have to say that you are loyal to our Queen. You are loyal to Britishers. How would you feel? Like तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं उनसे कुछ नहीं and suddenly they want us to praise them. That is what they were feeling at that time also. A nation of millions and millions of people forced to praise some foreign monarch. At that time, there was a person named Bankim Chandra Chattopadhyay. He stood up, he understood that what was happening, and political slavery begins with mental slavery was a slogan. अगर the people started believing that the rulers are superior, जो rule कर रहा है वो superior है, confidence चला जाता है. Like normally if we are in a class also and we are like one CR is doing everything and you are like we are not getting the opportunity and you'll be like okay I'm not doing it. That was what Britishers were trying to do. And at that time Bankim Chandra decided to write something very powerful. Not just a poem, not just a song, but a challenge to colonial thinking, the British thinking. And that is how Vande Mataram was born. Instead of praying for Queen, the song praised Bharat Mata. Instead of calling Indian subject, it reminded them that they were the children of their motherland. Okay, I would like to add a short story. Okay, so here I would like to add a little short story for you guys. It is a very powerful story and I liked it. जब protest चल रहा था against the partition of Bengal, that was from I think 1905 if I'm not wrong. But yeah, at the time of partition of Bengal, thousands of students came onto the streets. Like these students of our age, they just came to the streets. आ गए and the Britishers tried to stop them. थोड़ा मारपीट हुई, अरेस्ट भी कर लिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को. Like can you imagine, like there were lots of young people and they all were, not all but most of them were arrested and lots of things were happening, but they all kept shouting the same slogan. Can anyone guess what the slogan was? Can anyone guess what the slogan was? Exactly, Vande Mataram. And that was what showed.
And that was what shook the Britishers. They realized something dangerous that happened. India has found its voice. इंडिया को अपनी आवाज मिल गई थी and वो थी वंदे मातरम and it was impossible to silence them at that time. The journey of Vande Mataram. अभी हमने डिस्कस किया कि वंदे मातरम was composed by Bankim Chandra Chattopadhyay. It was back in 1875 when we were under the rule of the Britishers. Later, in 1905, Vande Mataram was publicly raised in Kolkata as we discussed about the partition in Bengal. At that time, it was very vocally talked among even every region of the India. Or divide people based on religion. That was the motive of the Britishers. What they did, the basic divide and rule. That अगर Indians में unity ही नहीं होगी तो उनको rule करना बहुत easy हो जाएगा. Like it is easier to rule one person individuals rather than a group of large people. Like if you're at a place there are hundreds of people and there are like a few of us, we cannot easily shut them. But if there are like little groups of like 4-5 people, it is very easy to shut them up. And that is what happened to the British. Instead of dividing people, it ignited a massive wave of protests. Students, workers, women, intellectuals, everyone came onto the streets. Everyone, there was one and only slogan, Vande Mataram. Imagine thousands of people marching together. No microphones, no social media, just the voices from each and every corner. That was Vande Mataram. The Britishers became so nervous that they banned the slogan in many places. Like if they said the slogan, they would be punished, maybe arrested, or even whatever they used to. But they were thinking that they don't shut us Indians. But let us all agree, जिस चीज के लिए मना करा जाता है वो हम जरूर करते हैं. Is that right? Yes. Yeah. So that what happened, and जितना उनको रोका गया उतना ही वंदे मातरम को बोला गया. ऐसे करते करते थी स्टोरी वंदे मातरम की. 1937 में थोड़े से पॉलिटिकल मिसकंडक्ट भी हुए कि one party agrees, one not, and lot of controversies happened. But still, in 1950, it was adopted as India's national song. But you know, fact that only first 2 paragraphs were taken there. Why not the rest 3? Because some believe that it could create discrepancies in religion, and some people might believe it, some people would fight over it. So only first 2 paragraphs were taken. In 1975-77, that was the time when the 100th anniversary of Vande Mataram was there. It had already become 100 years at that time, and as we see today, it had already completed 150 years of Vande Mataram. In 2025-2026, the NDA government initiated a year-long nationwide commemoration marking 150 years of Vande Mataram. Like, when I first read it, I could not believe that it had already been 150 years of people chanting the same 2 words. I think before I even myself, I read the presentation, before that it was just mere 2 words for me. But after listening to so many things on internet, YouTube, and learning it mostly through the presentation, I realized it is much, much more than that. More than freedom, spiritual identity. We are Indians. And I think one thing that matters to most of us is like some kind of connection to our spiritual things. कुछ ना कुछ तो हर किसी ने कभी ना कभी believe किया है. Now, in many parts of the world, a nation is merely defined by the political boundaries. Thank you. A line on the map, a treaty, a constitution. But India, the idea of a nation for India was very different. It was much more into the spiritual entity, religions, and lots of things. This is why we say Bharat Mata, Mother India, not a country, but our mother. Our Prime Minister once said, "This earth is my mother and I am her child." Honestly, it was said in Sanskrit.
but I'm bad at pronouncing that, so let us stick to the English. But yeah, the earth is my mother and I am her child. Bharat Mata and मैं उनका बेटा, बच्चा, whatever you say it. This is how powerful the idea is. When we see nation as a mother, the relationship becomes emotional, not just transactional. बहुत कॉमन चीज लेते हैं, अगर यहाँ पर हमारे किसी फ्रेंड ने, लाइक दो फ्रेंड्स हैं, आप दोनों फ्रेंड्स हो, राइट, आपके फ्रेंड ने ही कुछ ना कुछ बोल दिया कि इंडिया में तो ऐसा होता है, इंडिया ऐसा ये है, बहुत बार ऐसे मजाक में लोग बोल जाते हैं, तो आप भी काफी बार उसको मजे में ले जाओगे या रिएक्ट नहीं करोगे। बट वहीं अगर किसी ने गलती से, नॉट सेइंग दे वुड डू दैट, बट गलती से दे माइट से समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स, योर मदर, हाउ वुड यू रिएक्ट? Doesn't matter. True that. But doesn't matter how close you guys are, you would react somehow. And इसीलिए वो कनेक्शन ज्यादा डीप हुआ। जब हमने इंडिया को एक नेशन बोला, एक कंट्री बोला, तब तक एवरीबॉडी वाज ओके। बट जैसे ही हमने इंडिया को, हमारी कंट्री को एक माता का दर्जा दे दिया, भारत माता बोल दिया, तो हमारा एक इमोशनल डीप कनेक्ट भी हो गया उनसे। इसीलिए कहा जाता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में अगर हम देखा जाए, नेशंस को हम बॉर्डर और ट्रीटीज से कहते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट में हम स्पिरिचुअल एंटिटी पे ज्यादा फोकस रखते हैं। वी आर नॉट सिटीजन्स, वी आर चिल्ड्रन ऑफ भारत माता। माता भूम्यो पुत्रोन पृथ्व्या। आई डोंट नो, आई थिंक आई प्रोबेबली सेड इट रॉन्ग, बट इसका मतलब यही है कि भूमि मेरी माता है एंड मैं उनका पुत्र हूँ। We can see your wealth, wisdom and power. Okay, I think this is very common. With wealth we have Lakshmi माँ। I think हमने बचपन से प्रे किया है कि हम लक्ष्मी माँ को प्रे करेंगे तो हमारे घर में मनी आएगा, बरकत होगी। हम हर दिवाली पे प्रे करते हैं कि हमें मनी चाहिए, तो हम लक्ष्मी माँ की, हमें पढ़ाई से रिलेटेड होता है, विजडम होता है, सरस्वती माँ, एंड एवरीबडी प्रेज फॉर समथिंग और अदर ऑन एनी फेस्टिवल और इन जनरल आल्सो। And that is how we are more connected to our country rather than anybody else. Awakening the national consciousness. During the British rule, there was a challenge. The British constantly tried to convince Indians that they were weak, incapable of self-rule. लेकिन अगर किसी को बार-बार बोलोगे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या लगता है वो कर पाएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस को जैसे ही हमें कुछ होता है कि यार सबको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, बट वहीं अगर हमें नहीं भी आता होगा और हमें दो लोग बोल दे कि नहीं आप तो अच्छा करेंगे, पेपर में वो मस्त लिख के आए हैं, बिल्कुल टॉप करेंगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लाइक हाँ यार मुझे आता है, आई विल बी द बेस्ट ओवरऑल। वही डिफरेंस था। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया, तो उसको तोड़ा कैसे? उसको तोड़ा गया बाय वंदे मातरम। जब वंदे मातरम बोला गया, हमारे नेशन में जो सारे लोग हैं, सिटीजंस हैं, सबको एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ we are united, we are Indians and we can do anything and we can find our freedom. They portrayed India as a defeated civilization, but the idea completely shattered the narrative. Home Minister Shri Amit Shah once described it beautifully. वंदे मातरम ने एक ऐसे राष्ट्र को जागरूक किया जो अपनी दिव्य शक्ति को भुला चुका था। महर्षि अरविंद ने कहा, वंदे मातरम भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। इट इज अ वे फॉर द रीबर्थ ऑफ इंडिया। वंदे मातरम ने हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। The unifying force against division. Let us talk about one of the biggest strategies used by colonial rulers, divide and rule. The Britishers understood something very clearly कि साथ तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका, बट अलग अलग करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। So India's greatest strength was unity in diversity. हमने बचपन से सुना है, जब से हमने चीजें समझने की कोशिश करी है, हम समझे हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो हर जगह पढ़ा। So if they could divide people, they could weaken the freedom. Basic motive तो यही था।
One of the biggest example of this was partition of Bengal in 1905. The British tried to split Bengal among religious lines. Their hope was very simple. If people start fighting among themselves, the freedom struggle will collapse. And something remarkable happened. Instead of dividing, the voice became even more powerful, and the voice was, can I have it all of you to say it? The voice was Vande. Once again, Vande. Let's have some energy. I'm trying to impress. Once again. Okay, let's continue. People from different communities, from different language, from every different religions began chanting the same dialogue, the same two words, the voice of Vande Mataram. But story ना बंगाल में आके स्टॉप नहीं हो जाती है. ये पावर और जो सॉन्ग था ना ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया तो था. साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे एक बहुत अच्छी पोएट थे सुब्रमण्य भट्ट. उन्होंने वंदे मातरम को ना तमिल में ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि उनको तो नहीं आता ना हमारा संस्कृत, तो उन्होंने करा उसको तमिल में ट्रांसलेट. अब क्या हुआ कि जिनको संस्कृत आती है वो तो बोल ही रहे हैं, जिनको नहीं आती उन तक भी ये चीज पहुंच रही है. तो डिफरेंट लैंग्वेज बट सेम मोटिव सेम दो शब्द. इससे सदर्न इंडिया को हमने नेशनल मूवमेंट के अंदर कनेक्ट किया. इमेजिन दिस फॉर अ मूवमेंट, अ स्लोगन बंगाल में जो बॉर्न हुआ था तमिलनाडु में गूंज रहा है. But the story is even more fascinating. The slogan even crossed international borders. मतलब वो इंडिया के बाहर भी पहुंच गया. Freedom fighters ने इसका spirit other countries तक भी लेके गए. In London, revolutionary Veer Savarkar sang Vande Mataram. And in Germany, a brave Indian woman named Madam Bikaji Kama unfurled the Indian flag and raised slogan Vande Mataram before an international audience. Just imagine that moment. How revolutionary would it be? Like not just Indians, but people outside India are also chanting the same slogan. And that was the moment British realized something frightening. That way song को, दो words को, एक दो paragraphs को तो बैन कर सकते हैं, but जो हमारी feelings हैं, जो हमारे emotions हैं, वो उनको बैन नहीं कर सकते हैं. The history of political betrayal. कितने लोगों को politics में interest है यहाँ पर? Let's raise your hands. Okay. मुझे भी नहीं है guys. But yeah, history however is not always that simple. Okay. History is not that simple. Every great movement also faced internal disagreements and political बहुत सारे miscommunications भी हुए, misunderstandings भी थी, किसी का कुछ opinion था, किसी का कुछ opinion था. 1930 तक आते some political leaders began raising objections to certain parts of Vande Mataram. As I just told you a little before, that last three paragraphs were the major problem that some people were having. They argue that some imagery in the song would be controversial. This led to political discussions, disagreements, and eventually 1937 आते decision तो हुआ. But now whether people agree or disagree with that decision, हुआ तो decision. And हमारा वंदे मातरम का first two paragraphs were nationwide recognized. It was before also, but like a tap. We can say that. Nation building is never a straight path. बहुत सारे debates होते हैं, compromise भी किए जाते हैं, and बहुत सारे difficult choices लेनी पड़ती हैं. It involves like through all these political developments. Now one thing remains constant. कि feelings and emotions तो same ही थे हर Indian के. कि क्या चाहिए हमें? हमारा safe India, हमारा सशक्त India, हमारा independent India. अब हमारे पास next topic आता है the journey towards अमृत काल. कोई बताना चाहेगा अमृत काल क्या होता है? What? I would also like to laugh. बता दो.
Okay, fine. Let us come to the present moment. आज की बात करें तो इंडिया में आज की बात करें तो इंडिया हैज ऑलरेडी एंटर्ड व्हाट वी मे कॉल अमृत काल. अमृत काल इज अ पीरियड लीडिंग टू 2047. अभी हमने बात करी थी कि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन व्हाट ईयर? Yeah, in 1947 we got our independence, and in 2047 we are aiming to have, a Viksit Bharat, a very developed India. But अभी 2047 आने में तो टाइम है, अभी तो 2026 है ना, तो जो टाइम पीरियड अभी बचा है, around 25 years, right? तो जो ये टाइम पीरियड बचा है, इसको हम कहते हैं कि हम ऑलरेडी अमृत काल में आ गए हैं. Basically, the period leading to 2047, when India will celebrate 100 years of independence. इसके बारे में एक बार सोचो. Just imagine this: the generation before us fought for their azad, their freedom. Their dream was a free India. Freedom ही तो चाहिए थी हमें. And but आज की बात करें तो we have freedom, right? अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स से तो फ्रीडम है, राइट? बट या सो वो हमें फ्रीडम तो मिल रही है, बट आगे हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? वी आर ऑल द यूथ. आगे जाके 2047 जो मेजर देखना है वो हम लोगों ने, हमारी आगे जनरेशन जो आएगी, आर सेकंड जनरेशन, हमने सबने देखना है, राइट? तो उसके लिए हम कुछ तो सोचेंगे कि हमें चलो इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटिशर्स से, अब आगे क्या करना है? हमें डेवलप होना है, बहुत सारी चीजें करनी है. तो वही बात है कि जब वो लोग पहले हमें आजादी के लिए सोच रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे, अब हम यूथ हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं विकसित भारत के लिए. विकसित भारत of 2047, the aim of our nation, of our youth, to have a Viksit Bharat, or developed India, by the year 2047. Here we can say, our Prime Minister Narendra Modi ji said that ये वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़े रखता है, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है, एंड हमारे भविष्य को नए साहस से संवारता है. बेसिकली इसका मतलब था कि हम पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं, ये दो वर्ड्स वंदे मातरम. सो वंदे मातरम का स्पिरिट ऐसा तो नहीं कि उसी टाइम एंड हो गया, हम आज भी बोल रहे हैं, हम आगे भी बोलेंगे, क्योंकि इसका मतलब ऐसा नहीं कि हो गया. हमारा नेशन कभी नहीं होगा, हमारा नेशन हमेशा हमारा रहेगा, राइट? तो वंदे मातरम के साथ हमारे चलता रहेगा. मोर देन अ सेंचुरी अगो वंदे मातरम अवेकन्ड अ स्लीपिंग नेशन. सो चुका था एक पॉइंट पे तो नेशन की, ठीक है यार, मतलब ब्रिटिशर्स आ गए, कुछ करने नहीं देते, बहुत कुछ हो गया, कहीं नहीं पा रहे थे. तभी तो वंदे मातरम एक होप बन के आया था. उसने क्या हमें कॉन्फिडेंस दिया, हमें करेज दिया, इंडियंस को करेज दिया, एंड एक ड्रीम दिया, द ड्रीम ऑफ आजाद भारत. The dream eventually became a reality in 1947. But today our generation stands at another historic moment. If our ancestors fought for political freedom, right? What is our responsibility? Our responsibility is to build a strong, developed, and self-reliant India. Because history never stops. वो हमारे लिए हिस्ट्री, हम लोग आगे दो जनरेशन के लिए हिस्ट्री बन सकते हैं. अभी तो कोरोना गया था, वो तो सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है हिस्ट्री का, बट ऐसे ही बहुत सारी चीजें आएंगी, एंड आगे जाके व्हाट वी वांट इज आवर अपकमिंग जनरेशन बी टू सी और डेवलप नेशन. अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो आज 25 साल पहले हम भी तो एक समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं. उन्होंने तो 50 साल पहले सोचा था, हम तो 25 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं. क्या हम इतना सा ड्रीम नहीं कर सकते? क्या हम इसके लिए वर्क नहीं कर सकते? बहुत सारी चीजें हैं. एंड अब हमने हिस्ट्री तो पढ़ ली कि क्या हुआ था, किसने क्या किया, वंदे मातरम कैसे आया. आई थिंक आज के सेशन से सबको थोड़ा सा तो ज्यादा पता चला होगा वंदे मातरम के बारे में. यस और नो बेबी? या so we got to know a little more. अब हम उसको कंपेयर करते हैं with the today, the present and the future.
हमने वंदे मातरम का मीनिंग समझा, बट हम आप पढ़ते हैं थोड़ा सा रोडवे, द रोड मैप टू विकसित भारत। ओके ओके गाइस, थोड़ा सा और टाइम लो प्लीज, देन बातें करेंगे। नहीं नहीं सुनना तो यार, चला जा, बोल ना, सुन लो या सो भी जाओ, मेरे को तो बोलना, तो जो जो सुनना उनको सुनना। अभी हमने बात करी थी कि हम 25 साल पहले सपना तो देख ही सकते हैं गाइस। नाउ दैट हमें हिस्टोरिक चीजें समझ में आ गई, हम प्रेजेंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। विकसित भारत युवा कनेक्ट, रोडवे रोड मैप टू विकसित भारत। We often heard the phrase developed country. We want our India to be developed. We want to have a developed country. एंड ये सोच के हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं? तो मुझे कोई बताएगा डेवलपमेंट सुनते हो कि दिमाग में फर्स्ट वर्ड क्या आता है? सिविक सेंस, but okay, something else, civic sense, another, more comfort, okay, anything else? Facilities, or which? Infrastructure, okay, nice one. Anything else? Okay, हमने बहुत सारी चीजें बोली, कंफर्ट तो हमारा पर्सनल आ जाता है, बट अगर हम कंट्री के डेवलपमेंट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज अ वेरी गुड वन। डेवलप कंट्री की बात करें तो हमारे दिमाग में नंबर सबसे पहले आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, जीडीपी। बट विकसित भारत थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सिविलाइजेशन को भी वो साथ लेके चल रहे हैं। मतलब हम इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होकर रहेंगे, बट आल्सो वी वांट अ मोर कॉन्फिडेंट इंडिया in terms of not just money but also the culture, the values, the identity. The journey is guided by two important frameworks, the Panch Pran and the Gyara Sankalp. Let's have a look at that. We all can see here the Panch Pran. We want a developed India. We want to remove the colonial mindset. Even though the Britishers left, but some thoughts or something of them actually was left with us. We have to take pride in our roots and unity. Unity, I think, is one of the most common thing that we have had since I think I have heard anything about it. हर टाइम पे हर मोमेंट में हमने कहीं ना कहीं यूनिटी वर्ड तो सुना ही है। एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, ऑब्वियसली। संकल्प, ट्रेडिशनल्स कहते हैं कि हमने संकल्प लिया। आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड इन इंग्लिश, तो बताना चाहेगा? हां, लेट्स या। So 11 संकल्प, the 11 pledge, thank you. Fulfillment of duties, हम अपनी सारी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास दिमाग में लेके चलेंगे। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। आई विल अग्री विद यू दैट करप्शन तो है, बट कहीं ज्यादा मैं तो नहीं, कोई कह रहा है कि कम हो गया, बट ठीक है, हमारा माइंडसेट ये है कि हम करप्शन को भी कम करें। रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, लॉ को तो यार फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाओगे। वेरी सिंपल। कॉलोनियल हैंगओवर से फ्री होना, कर रहे हैं उसका काम, बट पूरी तरह नहीं हो पाए, हो जाएंगे। एंड ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान, सम्मान करना है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्वेशंस, वुमेन लेड डेवलपमेंट, भाई आई थिंक वेरी मच नीडेड। आई गेट इट, सबको लगता है कि women get some kind of privilege, but I think this is a very vast topic. Let's not touch that.
But yeah, women-led development is also very necessary. State-centric growth, एक भारत शस्त्र भारत. Okay, this slides put forward a very three like important and powerful questions. And first one is how will India in 2047 look like? हम बात कर रहे हैं कि हम डेवलप होंगे, हम सब कुछ करेंगे, बट कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपके लिए डेवलप इंडिया क्या है, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 2047 में? कोई कुछ भी बोल दो जो दिमाग में आ रहा है, मोदी जी है बट क्या इस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. प्लीज एनीवन. Better living standards, agreed. I agree with it. Yeah. Anything else? बोरिंग नहीं बनाते, थोड़ा सा इंटरैक्ट करते हैं, आपके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मेरे लिए. Better? AQI, okay. And okay, मैं बताऊँ एक आंसर. सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है. आई थिंक ये तो सबका कंसर्न है कि इंटर्नशिप नहीं मिलती, इतनी क्वालिफिकेशंस के बाद भी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है. आती है या नहीं आती है? अग्री या डिसएग्री कर रहे हो गाइस? आती है. तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है. बट हाँ, सबका पॉइंट ऑब्वियसली करेक्ट. बट हम कैसे उसको एक्सेप्ट लाइक उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट तो कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम तो कॉलेज में हैं, बट साथ थोड़ा कभी हमें कर लेना चाहिए. अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री वो मोर अपॉर्चुनिटीज के साथ, मोर जॉब्स के साथ, मोर इक्वालिटी, मोर इनोवेशन एंड मोर डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस. The honest answer is yeah, we can have that by 2047, but only if we, the youth of the country, want that. It depends on the choices we make today. हमारा फ्यूचर क्या है? हमारी आज की चॉइसेस ही तो है. हम फ्यूचर में अब अगर हम आज कुछ नहीं कर रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल हमें बहुत कुछ प्रेज दे? आज हमने कुछ किया ही नहीं. अगर हमारा पेपर है, हमने एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं, पास तो हम हो जाते हैं एक रात पहले पढ़ के. सारे एग्री करोगे, राइट? बट टॉप लाइन में आता है जो थोड़े टाइम से पढ़ रहा हो तो उसको उसी के चॉइस का रिजल्ट मिला, राइट? तो वही है कि रिजल्ट हमें वही मिलेगा जो हम आज चॉइसेस मेक करेंगे, राइट? चूज करेंगे. अब हमें सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कैन दिस जर्नी इवॉल्व इनटू जन भागीदारी आंदोलन? जन भागीदारी आंदोलन पता है किसी को क्या होता है? ओके, जन से हमें क्या रेफर हो रहा है? लोग. भागीदारी इज इक्वल्स टू इन्वॉल्वमेंट, मतलब जन भागीदारी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल. आंदोलन, आंदोलन प्रोटेस्ट ही होता है, ये कुछ और होता है. कैंपेन, ओके, प्रोटेस्ट कैंपेन ये दो होते हैं. एग्जैक्टली. तो जन भागीदारी आंदोलन का मतलब तो ये हुआ कि एक ट्रू पीपल्स मूवमेंट, एक कैंपेन, एक प्रोटेस्ट ऐसा जहाँ पे सारे लोग एक साथ आए, एक साथ मिलकर वर्क करें, बोले, प्रोटेस्ट करें, व्हाटएवर इट इज. बट क्या हम इस जर्नी को एक पीपल्स मूवमेंट बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? आई थिंक डेफिनेटली बना सकते हैं. क्या आप लोगों को लगता है बना सकते हैं? 2047 हमें डेवलप होना है. क्या ये सिटीजन्स के एक साथ आए बिना हो सकता है पॉसिबल? एग्जैक्टली नहीं हो सकता. तो इसके लिए हम सिटीजन्स को एंड मेनली यूथ को साथ आने की जरूरत है. एंड थर्ड, हाउ कैन यंग पीपल टेक ओनरशिप? हमने इतना सुन लिया कि हम करेंगे, हमें ये भी करना, हमें वो भी करना, बट हम ओनरशिप लिए कैसे? अब थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. एंड उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इज आप अपने मेंटोर से बात करें. आप अपना ऑनलाइन, गाइस गूगल आज सबके पास है. गूगल पे हाँ ठीक है, बहुत इजीली चीजें नहीं मिलती हैं, बट अगर आप एक घंटा भी बैठ के थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करो तो कुछ ना कुछ आपके इंटरेस्ट की चीज मिल ही जाए. This is the most important one of them. The youth of India are not just supposed to be spectators. हम देखने के लिए नहीं बैठे, हम बैठे
हैं यहाँ करने के लिए, हम खुद ही डिजाइनर्स हैं, हम खुद ही आर्किटेक्ट्स भी हैं, सॉरी, एंड हम खुद ही ड्राइवर ऑफ चेंज। Whether it is technology, entrepreneurship, volunteering, innovation, community development, and fulfilling our duties with discipline, youth can shape the entire trajectory in India's future. So these three questions set the stage for the rest of the presentation where we explore the pillars of Viksit Bharat. As you can see here, we have the anchors of Viksit Bharat: growth engines, sustainable development, social sector reforms, Atmanirbhar Bharat, Sashaktra Bharat, and global stature. Okay, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. Okay, I think अभी यहाँ पे आपने बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? Yeah. So infrastructure is one of the greatest growth engine, a greatest pillar in our Viksit Bharat, Shakta Bharat, and whatever you guys want to say. If you look at the slide, you will see a scale of transformation that is happening across. We have three graphs here, right? The government has allocated a record of 11.21 lakh crore just for infrastructure. 11.21 lakh crore. That is a very big number, guys. And that was just set aside for infrastructure in 2025, the highest ever. This shows a very clear intention to make India's infrastructure the backbone of its growth. बहुत सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, नेशनल हाईवेज. हमारे जहां 2014 की हम बात करें 19,000 किलोमीटर के अराउंड थे, आज के टाइम में वो 1.46 है. We can see that the first one, expansion of national highways, starts with 2014, okay, 2004, but if we see a number 91,287 in 2014, आज की बात करें तो it is 146,145, 1,45,145. But अगर हम वही फ्यूचर की बात करें, हमारे गोल की बात करें, so we have around 2,30,000 in 2047. Along with the airports, 2014 we had 74, and in 2025 we had 160. But हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है 400. You guys think it is possible? हो जाएगा? आप भी दे सकते हो. ओके, बट हमारा गोल पर हम ट्राई करेंगे कि हमारा गोल कंप्लीट हो. वैसे ही हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस है ग्राफ में. अगर आप लोग देख सकते हैं तो लास्ट ग्राफ, कैन यू गाइस सी? ओके, 2014 में जस्ट 550 ग्राफ इतना लो है. आई थिंक दूर लास्ट वाले को शायद कंप्लीटली दिखेगा ना, बट आज के टाइम में हम ग्रोथ देखें 2024 में 2024 right or 2004, but yeah, it was 4,610, and but our goal is a lot higher. It is 50,000. We are trying our best to achieve. ग्रोथ इंजन की बात जब हम करते हैं तो हमारा एक मेजर ग्रोथ इंजन आ जाता है स्ट्रीमलाइनिंग इंडियाज इकोनॉमी. Over the last decade, India has gone through an economic cleanup. अगर याद हो तो हमारे जो नोट्स थे वो बैन हुए थे 1000 वाले, किसी को याद हो? क्लीन अप हुआ ना. हमें ओके, यूपीआई आई थिंक सबको पता है क्या होता है. आई थिंक हम यहाँ पे 90% of people sitting here are using UPI, right? On this slide, we can see a few key reforms also. First, Jan Vishwas Act 1.0 and 2.2. These laws decriminalize minor offences and reduce the unnecessary penalties. Earlier, even the smaller clerical mistakes were comprised into legal trouble. छोटी सी गलती में भी legal trouble में हम घुस सकते थे. But इसने हमारे प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व किया.
वैसे ही इंडिया has now over 6.2 crore MSMEs. Guys, I did not know before I read the presentation, but I think that is a really great number. Third was the Insolvency and Bankruptcy Code, IBC. It cleaned our financial system. It helped banks recover money from defaulters, restored our credit discipline, and revived many stressed assets. Finally, we can see the massive rise in India's GDP from $2 trillion in 2014 to $4.3 trillion today. We can see the graph here for the GDP if you guys can. So this one. In 2014 it was 2, 2024 4.3, more than double. And our goal is even much more larger than that, to have it 30 by 2047. ग्रोथ एंजन्स में हमारा डिजिटल इंडिया की हम बात करें, यूपीआई हमारा एक बहुत बड़ा और कॉमन एग्जांपल है। यूपीआई ने आजकल हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। बट अगर हम उस टाइम की बात करें जब यूपीआई नया आया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट इवन बिलीव कि इंडिया में वर्क कर पाए। बट आज देखा जाए तो आई थिंक स्मॉल जो सब्जी वाले आते हैं गली में, उनके पास भी क्यूआर कोड होगा। एक बहुत फनी एग्जांपल इसका ये भी है उस कमिंग ऑटो से, एंड देयर वाज लाइक एन आंटी सेलिंग, आई डोंट रिमेंबर पेन और समथिंग, बट आई सेड कि चेंज नहीं आंटी, एंड शी लिटरली टुक हर क्यूआर कोड का प्रिंट आउट एंड शी सेड इस पे कर दो। तो तब का हमारा एग्जांपल होता था कि क्यूआर वर्क भी नहीं करेगा, एंड आज हर किसी के पास क्यूआर। ग्रोथ इंजन्स डिजिटल इंडिया, आज के टाइम में हमारे पास 1.16 बिलियन वायरलेस कनेक्शंस हैं, over 53.92 करोड़, around 54 करोड़ डिजिटल यूजर्स, एंड हमारा इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस। कोविड के टाइम there were 220 crore vaccine administered at that time, and we can see, किसी को याद है जब हमारे पास नया नया इंटरनेट आया था तो हमें कितना महंगा होता था 1 GB डेटा, एंड आई डोंट रिमेंबर द कॉस्ट, बहुत महंगा था, मम्मी यूज भी नहीं करने देती। बट आज के टाइम हम देखें तो 1 GB तो पता ही नहीं चलता जाता है, आई थिंक यहीं पे इतना ज्यादा चला गया होगा। बट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास सोलर पावर आ जाता है। वी कैन सी द ग्राफ 2047, 2020, 2025 एंड 2047, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी हमने सोलर पावर नया नया सुना था कुछ टाइम पहले, बट उसमें भी इतना वर्क हुआ है दैट इन 2025 it has crossed over 1,05,650. सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स, अंत्योदय, हम गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पे ध्यान देंगे, ज्ञान को सम्मान देंगे तो विकसित भारत बनेगा। बेसिक मीनिंग ऑफ दिस थॉट इज दैट हम सबको साथ लेके चलेंगे, not just the poor, not just the middle class, even the garib, the villagers, the farmers, the women, every other person and every other concept of India will have everyone and everybody and everyone together. कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास 5 करोड़ प्लस पीएम आवास योजना थी, उसके अंदर ओवर 5 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किया गया था। ओवर 3.69 लाख करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर थे, एंड ओवर 1 करोड़ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप्स। Here are some graphs for the same. Again the same nara, the same thought, हम गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पे ध्यान देंगे, ज्ञान को सम्मान देंगे तो विकसित भारत बनेगा। Empowering women-led development, we just talked about women. Women को हमें empower करना पड़ेगा अगर हमें डेवलप और एक अच्छा विकसित भारत चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज को लेके नहीं चलेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे, उसमें women का एक बहुत बड़ा रोल है। आत्मनिर्भर भारत, हमें सेल्फ रिलायंट होना, हम एक पॉइंट पे रिलाई करते थे, हम अब इतना नहीं करते हैं, बट हमारा गोल है कि हम बिल्कुल भी ना करें। स्पेस एंड इनोवेशन की बात करें तो मंगलयान
मगनियम सबने हमने सुना है, कोई बताना चाहेगा कुछ इसके बारे में? ओके ठीक है, मंगलयान सबने सुना है, चंद्रयान भी सुना है। हम बात करें कि हमने 1963 में एक छोटा रॉकेट लॉन्च किया था टू बिकमिंग द फर्स्ट नेशन to land near the south pole of the moon, and our journey since then has always been remarkable. Shashakt Bharat, goal of self-reliance in Indian Defence Forces, is important for 21st century India. Operation Sindoor, सबको पता होगा Operation Sindoor के बारे में? That was the biggest example here. हमारा डिफेंस INS विक्रांत सबने सुना है। यहाँ पे बहुत अच्छा फैक्ट भी है, over 346 items were added to the defense list. That is a very big number and that is very impressive as well. Last but not the least, अगर हम compare करें then and now को, तो हमारा India was third world country. Now it is Vishwamitra, the friend of the world. हम पहले बहुत ज्यादा फॉरेन गोल्ड बेलआउट पे डिपेंड करते थे, बट आज के टाइम में देखिए तो वी आर डोनर नेशन। हम डोनर है फॉर ओवर 150 कंट्रीज एंड हम बहुत लिमिटेड एंड स्कैटर्ड थे उस टाइम पे, वी अग्री, बट आज के टाइम पे देखिए तो इंडिया इज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड ग्रोइंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। टुडे एवरी इंस्टीट्यूशन एंड एवरी इंडिविजुअल शुड मूव विद द रेजोल्यूशन दैट एवरी एफर्ट एंड एक्ट विल बी फॉर विकसित भारत। With that, I would like to end today's meeting. I hope you guys will not get tired. Thank you. You guys are all doing. Oh, silence, please. Please, silence. Silence. Thank you so much, Lavisha, for that insightful and motivating presentation. Yes. Now we move to the next segment of today's program, that is Yuva Samvad, an interactive session. So if you have any question or query, you may raise your hands. Any question, query, or anything you want to discuss? If you have any question, any query, or you want to discuss anything, kindly raise your hands. Thank you. So before we conclude, I would also like to remind everyone that My Bharat registration stall has been set up at the corridor outside this room, and students are encouraged to visit the stall and register on the My Bharat platform. I hope you all have registered by the My Bharat app. So, may I request Dr. Deepshika to present the memento to Lavisha as a token of our sincere thanks. Deepshika ma'am. As we approach the conclusion of this inspiring session, it is time to express our gratitude to all those who have made this event possible. Let us carry forward the message that the future of India lies in the hands of the youth. With passion, responsibility, and collective effort, we can certainly realize the dream of Viksit Bharat by 2047. Now, dear participants, we request everyone to kindly fill out the feedback form, and which is mandatory for this particular event. Please scan the QR code that is displayed here and share your valuable feedback. Your responses will help us improve and organize even better programs in the near future. We also encourage all of you to share your ideas and suggestions, and for this purpose, a suggestion board has been placed outside this room. So please feel free to write your thoughts, your recommendations,
recommendation, your feedback, and your ideas. Okay. So your voice and ideas truly matter for us. Thank you, everyone. Please write your suggestion on the suggestion board. It is placed outside this